Hello, very hello, very good afternoon. Sorry, very good morning to all of you. Uh, Today in environmental lecture number 13, we will already finish just about the diversity and level of diversity in previous class about the alpha, the beta, and gamma, and also the definition of diversity and food that you have seen what is the ecosystem and food chain, etc. in the previous classes. So when we coming to the this lecture of ecosystem and biodiversity, this unit number 3, so we'll talk about the conserve ecosystem and the biodiversity, and also we'll enlist the endangered species in the biodiversity. So today we will learn uh, about threats to the biodiversity, hotspots of biodiversity, list of endangered species, and conservation of biodiversity. So first we will start with the threats to the biodiversity. Threats mean what is the impact on the due to the reduction of the species or invasion of the species from the destroying forest and other disturbance of the other ecosystems. So that are called as threats. So biodiversity is under serious threat as a result of human activity. ह्यूमन एक्टिविटी क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी ये क्या है? हम पेड़ों को काट रहे हैं, हम माइनिंग कर रहे हैं, हम लार्ज क्वांटिटी में फिशिंग कर रहे हैं ड्यू टू आवर ग्रीड, यानी ह्यूमन का जो लालचपन है कि ज्यादा से ज्यादा हासिल कर लेना और फिर उसको वेस्ट कर देता है. So that greed of human being due to industrialization also, so various threats are uh, done to the ecosystem, and that's are called as the threats to the biodiversity. Okay, so we will. There are four major causes or losses of your biodiversity, and they are the first one, the habitat loss.
and fragmentation, over exploitation, and due to about those the alien species invasion and the co-extinction. Okay, so we will see all these four one by one. So when we come to the habitat loss and fragmentation, the tropical rainforest once converting 14% of the land surface of Earth, but now they cover only 6% of the land area. So what we are doing? It means that we are cutting the forests and trees. So habitat there, the living organism or non-living things, because we are disturbed, we have cut down the trees, or maybe due to the rain, some forests are destroyed. So that is why the habitat in this forest they are uh, disturbed. The Amazon rainforest, called the lungs of the planet, are cleared for cultivation of soybeans or are converted into the grassland for raising beef cattle. So that is also main greed, and that loss is all the world are seeing in terms of the climate change and the increase of the temperature of the planet. The loss of habitat deprives many animals and plants their homes and face extinction. Loss of habitat, many animals and plants their homes and they face extinction, and the degradation of many habitat by pollution threats survival of many species. So this is because the threat is nothing but due to human activity. पेड़ों को हम काट रहे हैं हमारे मकसद के लिए, जहाँ पर हमको चाहिए हम आग लगाकर डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं, या फिर नेचुरल आग की वजह से हमारे फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। आप कोई भी रीजन लीजिए, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? एक तो जो स्पेसीज जो हैबिटेट है वो लॉस हो रहा है, जिससे जो इकोलॉजिकल साइकिल, जो इकोसिस्टम की जो साइकिल है वो मेंटेन नहीं हो रही है, एंड उसके इफेक्ट और इम्पैक्ट हम लोग इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वी आर सीइंग, है ना। इसी तरह एक एग्जांपल यहाँ पर दिया है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है, that is called as the lungs of the planet, many of that are cleared for the cultivation of soybeans or converted they into the grassland of raising the beef cattle. तो घास उगाने के लिए, to feed the cattle, हम लोग वैल्यूएबल फॉरेस्ट को क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। So these are the, due to that habitat in the jungle forest or jungle you can say, they are disturbed, है ना। प्लांट नहीं है, जो प्लांट को जो एनिमल ईट करते हैं वो वहां नहीं रहेंगे, और वो एनिमल को जो कार्निवरस एनिमल्स है, they, they will also not wait there. Okay, so that is why we are saying that the habitat are disturbed. Okay, so that is the first uh, damage to the ecosystem due to the habitat loss, and the cycle will not be maintained. Second point, you can say the over exploitation, है ना। आप बोलिए कि बहुत ज़्यादा हमको प्रोडक्शन चाहिए, so we are using the chemicals into our industries and we are discharging into the environment, and due to that the contamination into the water, land and soil, they affect the
habitats. eh? These are also by the human being, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं हमारे मकसद के लिए, है ना। ज्यादा से ज्यादा हम ट्रीज कट कर रहे हैं, हाँ, हमारे बॉयलर्स को रन करने के लिए, या फिर हमारे कुछ और मकसद के लिए। उससे हमारा जो पार्ट ऑफ फॉरेस्ट है वो कम हो रहा है, जंगल है वो कम हो रहा है। दूसरा, हम ज्यादा प्रोडक्शन के लिए केमिकल्स यूज कर रहे हैं, एंड दे आर डिस्चार्जिंग टू द वाटर बॉडीज। उसकी वजह से जो फिश कल्चर है, जो सर्वाइव करना है, जो नेटिव फिश कल्चर है, वो डिस्टर्ब हो रहा है ना। तो व्हाट इट व्हेन नीड टर्न्स टू ग्रीड, इट लीड्स टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यानी इंसान की जो नीड है, जितनी जरूरियात है, और उससे ज्यादा अगर हम कोई काम करते हैं या प्रोडक्ट बनाते हैं, तो दैट इज नथिंग बट वी कैन से दैट इट इज, जब नीड यानी जरूरत टर्न्स टू ग्रीड, यानी जरूरत जब लालच बन जाती है, तो इट लीड्स टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन, और उसकी वजह से ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एंड मेनी स्पेसीज बिकम एक्सटिंक्ट। बहुत सी स्पेसीज जो है वो वहां से, जो वो हैबिटेट पर, जो जंगल पे, जो फॉरेस्ट पे डिपेंड है, वो वहां से गायब हो जाती है। इसी तरह फिश में अगर देखेंगे कि केमिकल्स की वजह से फिश कल्चर जो है, जो वहाँ की फिश है, जो नेटिव फिश है, उसको डिस्टर्ब होती है, और दे विल डाई, है ना, ड्यू टू द केमिकल्स। So this is nothing but you can say the over exploitation, the your second uh, uh, threats to the biodiversity. Then again we'll come to the alien species invasion. Alien species invasion means what? कि हमारा जो सिस्टम है, अगर आप ये फिगर में आप देखेंगे कि there is, you can see the rats, you're seeing these rats in the picture. इन्वेजन स्पेसीज, फॉरेस्ट में आग लगने की वजह से या फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होने की वजह से वहां पर जो हैबिटेट है वो मूव होते हैं दूसरे कल्चर में, और वहां पर वो कल्चर को डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि वो जो यहाँ पर रह रहे थे, उसकी वजह से, उसको डिस्ट्रॉय होने की वजह से, लॉस ऑफ हैबिटेट होने की वजह से, तो व्हाट वी आर, दे आर मूव टू द लैंड or any other ecosystem, and that's why they disturb the, and that is nothing but it is also the one of the causes of extinction. And for that we will see this small video. I will run to you, you can watch this video. This is the video link for the alien species. तो एलियन स्पेसीज किसको बोलते हैं? जो स्पेसीज जहाँ का हैबिटेट खराब हो गया है, वो दूसरी जगह मूव होते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज एलियन invasion. This is the example of Netherlands.
तो हैबिटेट चेंज होने की वजह से या डिस्ट्रॉय होने की वजह से, फॉरेस्ट कटिंग होने की वजह से वहाँ के जो स्पेसीज है वो मूव होते हैं दूसरी जगह पर, और दे आर ऑक्युपाइंग द places of native species. You can see in this picture also that the birds, when he's returned to its home, he found someone else in his nest. Okay, so these bird, the native species, uh, places they are occupied by the another. So that's why this system is uh, what you can say is changing. And these invasion of the rats and parrots and other animals from the forest, they will disturb the ecosystem of another place. And that maybe you can say the habitat loss. और उनकी वजह से क्या होती है कि नेटिव एनिमल्स, न्यू डिसीज जो फॉरेस्ट की है वो they bring to the native animals and they are dying. This is invasion species, and they destroyed the native fish culture of your Netherlands. This is an example of Netherlands where this type of fish they are destroys the total fish culture there, and the native fish are no more available for them. These are the invasion species. They are moving towards the land. You have seen the invasion of the species due to the human activity only, and that's why it is disturbing the your ecosystem. And here you can see also when the alien species are introduced in an area, some of them become invasive and may cause extinct or endangered species. For example, introduction of Nile perch into a Lake Victoria, East Africa caused extinction of many species of sea cichlid fish in a lake.
Individual weed species such as Parthenium carrot grass. What their invasive species, what they are doing, they come and they destroy the native species, है ना, जो पहले से पैदाइशी तौर से ये स्पेसीज अवेलेबल है वहां पर ये हैबिटेट डिस्ट्रॉय होने की वजह से फॉरेस्ट का दे विल कम टू द लैंड एंड दे विल डिस्टर्ब द नेटिव स्पेसीज। तो वहाँ पर जो फिश कल्चर जैसे वीडियो में हम लोग ने देखा नेदरलैंड का एग्जांपल, तो दैट नेटिव फिशेस they are no more available now due to that invasion of the other fishes from the sea or we can say from other sources। इसी तरह कोई अगर बर्ड्स है, अगर वहाँ के हैबिटेट वो डिस्ट्रॉय होता है तो उसके ऊपर जो डिपेंड है दे विल कम देयर। So that's why the other part of the species they are uh, destroyed. Now you'll see the co-extinction. When a species become extinct, the plant animal species associated with it also become extinct। यानी अगर हम देखेंगे कि अगर एक स्पेसीज अगर डिस्ट्रॉय होती है तो उस पर डिपेंडेंट दूसरे स्पेसीज जो है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं एक जगह, है ना, कम होने लगते हैं। तो दैट इज द को एक्सटिंक्शन। व्हेन अ होस्ट फिश बिकम एक्सटिंक्ट इट्स यूनिक पैरासाइट आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। तो ठीक है ना, अगर कोई फिश कल्चर है अगर वो आती है हमारे यहाँ पर यानी नेटो प्लेसेस पे, तो इट्स यूनिक पैरासाइट, उसके जो पैरासाइट है दे विल आल्सो मूव टू दैट प्लेस। Similarly, when one partner of a co-evolved pollinators mutualism becomes extinct, the other partner also has the same fate. So this is the due to the uh, uh, threats to the biodiversity, and this figure uh, fill the stories. What is the causes of extinction? Okay, so causes of extinction: loss of habitat, invasion of species, lack of food. Due to lack of food, these animals are destroying. Lack of genetic diversity, and then human predators. They are killing to the birds and the natural habitats, and then this this is due to that the climate change and global warming also we are seeing. Similarly, the loss of one species you can say leads to the loss of another species, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो loss of one species leads to the loss of another। That is the chain of extinct, है ना, that is the chain of extinct, and that chain will be broken due to the invasion or due to the another reasons। Can be caused by small impact in the beginning, लेकिन बाद में ये बड़ा लॉस होता है। स्टार्ट में हमको लगेगा ये छोटा सा इम्पैक्ट है, लेकिन धीरे धीरे ये बहुत बड़ा लॉस सामने आता है। अब प्रीडेटर लॉसेस, इट्स फूड सोर्स, वहाँ के रहने वाले जो पूरा पहले के एनिमल है नेटिव एनिमल, उनके फूड सोर्स पर तो अफेक्ट होता है, एंड अफेक्टेड बाय द इंटरकनेक्टेडनेस इन द नेचर। तो दैट इज द different causes or threats to our ecosystem, or you can say the biodiversity। Yani, that is the biodiversity means many types of animal plants are available, and due to this human activity, they are destroying or reducing. So animals are reducing, plants are reducing, birds are reducing. So that will affect the biodiversity। Diversity means any variety, and a bio means any living things। So that will affect the living organisms. It may be plant, it may be animals, it may be human beings. They are affecting, and that is due to the human activity. That is it.
Now the hot spots of the biodiversity, यानी कहाँ पर हमारे को बायोडाइवर्सिटी का इम्पैक्ट ज़्यादा है, where the hot spots that is you will see. A biodiversity hotspots is a biogeographical region that is both a significant reservoir of biodiversity and is threatened with the destruction, है ना? डिस्ट्रक्शन, मेजर डिस्ट्रक्शन आप देखेंगे तो इट इज over exploitation and due to the cutting of your trees, and that will affect the habitat. Large regions containing exceptional concentrations of plants and animals and experiencing high rates of habitat loss. तो ऐसी जगह पर अगर हम ट्रीज को कट करते हैं हमारे पर्पस के लिए, तो that large regions containing the habitats of plants animals, they are losing or they are moving to other places or they are destroying to other habitats. So that's why तो biodiversity के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, यानी जो varieties of plants और एनिमल है वो क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, या फिर नए स्पेसीज जो कि दूसरी जगह के दूसरी तरफ नेटिव स्पेसीज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. तो दैट इज द यानी एक हम बोलेंगे कि दूसरी तरफ से जो आने वाले चंद परिंद हैं वो जो हमारे यहाँ के जो नेटिव स्पेसीज हैं, यानी कि गाय बैल बकरियां और दूसरे फिश कल्चर, है ना, वो उनके ऊपर आकर वो डिस्ट्रॉय करते हैं, है ना. और ये क्यों होता है, ये ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से प्लांट कट करते हैं, या फिर हम केमिकल यूज करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, या फिर हमारे मकसद के लिए कि जैसे कि सोयाबीन को कल्टीवेशन करने के लिए फॉरेस्ट को कट किया गया, ग्रास अपने मकसद की उगाने के लिए फॉरेस्ट को कट करना किया गया. तो ये क्यों है, ये इफेक्ट कर रहा है बायोडाइवर्सिटी को. तो वहां पर रहने वाले जो जानदार और चरिंद परिंदे हैं वो मजबूर हैं अपनी जिंदगी को बचाने के लिए कहीं और वो चले जाएं या मूव हो जाएं. तो ये दैट इज द कॉज ऑफ द यानी थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी यू कैन से. और हॉट हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हॉट स्पॉट कुछ रीजन्स हैं जहाँ पर ये स्पेसीज और यहाँ पर ये इंडेंजर है ना. तो ये हॉट स्पॉट्स कहाँ कहाँ है इंडिया में, और तो वी कैन सी दैट important hot spots in India are the Western Ghats and श्रीलंका, है ना. तो श्रीलंका हमारा नेबरिंग कंट्री है, और वेस्टर्न घाट बोले तो द रीजन फ्रॉम द गुजरात टू द बॉटम ऑफ द रिवर केरला and the Himalayan region in the north of your India and Indo-Burman region. It is also northeast side. You can say uh, this. From the graph, you can easily understand in India, 10 regions are there for the biological classification of India. You can see. So here, this region, I will draw the line. This region is the Western Ghat, and we are coming over this from the Gujarat to the bottom of your Kerala. This is coming under the Western Ghat, this region, and then Gangetic Plain. You can say it is the this one. This is the Gangetic Plain where the okay. Then Deccan Plateau. It is very large. You can see this Deccan Plateau. This is the Deccan Plateau. You can see this. And
semi-arid zone. So this four number you can see, the Gujarat, Rajasthan, and part of Punjab, etc. They will come into the semi-arid zone. And then you can see third one, the desert in Gujarat, the Kutch region. You can say this is the desert. So likewise, this is the biogeographical classification of India, and this map easily available in the on the internet. You can download and you can see the biogeographical classification of India. The classification of India is the biogeographical classification of India is about 10, and all these regions are specified. And Himalayan zone, this is this number two. You can say it is the Himalayan zone. On first one, the Trans-Himalayan region. Okay, so Trans-Himalayan region is the first one. This uh, head of the our India. You can say to the north, and then different regions or 10 regions are divided. So you can uh, download this, and you can understand the biogeographical regions of the 10 region of India. Their areas are also written here. You can see that the this 10 region, the Andaman and Nicobar is also covering the coastal region of India, northeast region, Gangetic Plains, Deccan Plateau, Western Ghats, semi-arid zone, and this area 16.6 for the semi-arid zone, Indian desert zone, the 6.6% of the total biogeographical region, Himalayan zone are 6.4 percentage of the total. So this is the map of India you can see, and the biogeographical classification of the India into the 10 regions we have seen. So Western Ghat and Sri Lanka, the Western Ghat known locally as the Sahyadri Hills. तो जनरली हम लोग देखते हैं कि हम भी जब बॉम्बे जाते हैं तो हम वी आर क्रॉसिंग द सह्याद्री हिल्स रन पैरेलल टू इंडियन वेस्टर्न कोस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो रीजन है ये इंडियन वेस्टर्न कोस्ट और जमीन के अंदर अप टू 15 किलोमीटर ये पूरा जो रीजन है दैट इज नथिंग बट द वेस्टर्न घाट। ओके, they cover an area about 1,60,000 square kilometer and stretch for 1,600 kilometer from Gujarat to the south tip. So this start from the Gujarat and this end from the South Indian uh, tip. Okay, it is habitat of variety of mammals, reptiles and birds. Okay, so these are there. They can many birds and habitats are there, and you can then when you come to the Himalayan region, it includes the entire Indian Himalayan region and the falling in Pakistan, Tibet, Nepal, Bhutan, China, and Myanmar. So this covers the whole region. This Himalayan region is start from you can see the Pakistan, India, China is there, Nepal, and the Bhutan and the Myanmar and Bangladesh also. But Bangladesh is not coming in the hotspot of this biodiversity. You can see it is X. Then the this hotspots is home to important population of the numerous large birds, mammals, including vultures, यू कैन से जिसको गिद्ध हम आम लैंग्वेज में हिंदी में बोलते हैं गिद्ध टाइगर्स एलिफेंट्स rhinos and wild water buffalo all these habitats of the Himalayan regions that is the hotspot and they are reducing uh, their variety. Then the Indo-Burma region
encompassing more than 2 million square kilometer. It is more than 2 million square kilometer. Who is late joining? I will not marking their attendance. So I am let them to join, but I am not marking their attendance because uh, they have to change their behavior. They, have to they should join uh, only up to 5 minutes of the start of the lecture. Otherwise, I will not put the attendance. It is lost. It is your loss. It is not my loss if you are joining the late to the lecture. Now you can see here the encompassing more than 2 million square kilometer of tropical Asia. This is the Indo-Burma, you can say the biodiversity region is still revealing its biological treasures. Six large mammal species have been discovered in the last 12 years. This hotspot also holds remarkable endemism in freshwater turtle species. Bird life in Indo-Burma is also incredibly diverse, holding almost 1,300 different birds and species in this region. So you can this Indo-Burma region you can see start from the India to the Myanmar to the Thailand and the Cambodia and Vietnam. All this coming into the part of China. They are coming into the Indo-Burman region, and this biodiversity there are also many species and about 1,33,000 different birds and species are there, and due to the cutting of the trees and all this thing for human activity they are destroying the this uh, threats to the biodiversity. Then the endangered species के ताल्लुक से अगर हम बात करते हैं कि ऐसी स्पेसीज जो कि डेंजर है जो कि वर्ग ऐसी जगह पर है जो वर्ग ऑफ द यानी they will like ये ये वर्ग ऑन द डिस्ट्रॉय है ना ये जो कि जिनकी तादाद जो है हम जो बोलेंगे पॉपुलेशन ये कम होते जा रही है दिन ब दिन. The organisms whose number have declined rapidly and species might to be wiped off from the earth in near future are called as endangered species. तो ऐसी species जो कि अभी animals और plants जो भी आप बोलिए they both are coming the living organism and their count or their number is decline. उनकी तादाद में लगातार कमी आ रही है. तो ऐसे स्पेसीज को हम क्या बोलते हैं ये दे आर इंडेंजर्ड स्पेसीज या जल्द ही ये दुनिया से ये स्पेसीज जो है इसका नाम और निशान मिट जाएगा. दे विल नॉट एग्जिस्ट. तो इसको ऐसी स्पेसीज को हम लोग क्या बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पेसीज है ना. तो बीच में ऐसा हुआ था कि हम देखते हैं कि लिपोर्ड है या टाइगर है दे आर इंडेंजर स्पेसीज. फिर उसके ऊपर ध्यान दिया गया है ना. एलिफेंट हैं दे आर इंडेंजर स्पेसीज. फिर उनके ऊपर ध्यान देकर उनको वापस रिहेबिटेट करना और दैट इज वी आर डूइंग नाउअडेज. लेकिन स्टिल there is the destroy of the lands, the forest land by the human being is continuous due to its greedy nature. है ना. लालचीपन की जो आदत है इंसानों की कि थोड़े से बस नहीं है ज़्यादा चाहिए. ज़्यादा के चक्कर में जो वैल्यूएबल लैंड है फॉरेस्ट लैंड है और दूसरे ऐसे कल्चर्स हैं और उसको उसको हम लोग इंडेंजर कर रहे हैं हमारी एक्टिविटी वजह से. इट इज द ह्यूमन एक्टिविटीज. तो हम उसको रोक सकते हैं और उनके थ्रेट को जो डाइवर्सिटी को हम थ्रेट कर रहे हैं उसको भी रोक सकते हैं. तो उसके लिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन WWF पब्लिश्ड
A book containing the details of endangered and threatened species of flora and fauna, okay, animals and plants, called as Red Data Book. So this book, you can see that the cover of the book, Red Data Book cover. तो उन्होंने WWF ने वर्ल्ड वाइड लाइफ फेडरेशन WWF ने ये डाटा रेड डाटा बुक जनरेट किए है जिसमें जो स्पेसीज इन डेंजर अर्थ में जिनके तादाद बहुत ज़्यादा कम हो रही है, तो उसको किस तरह कहाँ उसको उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। Then the red data book symbolizes a warning signal for those species which are endangered and how to be protected. तो उन्होंने हाईलाइट किया है कि कौन सी स्पेसीज जो है इंडेंजर है और उसको किस तरह हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज दे आर लाइकली टू बिकम एक्सटिंक्ट, अदरवाइज ये लाइकली टू बी एक्सटिंक्ट व्हेन दे विल सिर्फ हिस्ट्री के पन्नों में रह जाएंगे और नियर फ्यूचर दे विल नॉट सी, है ना, जैसे कि हम लोग ने डायनासोर के ताल्लुक से पढ़ते हैं दे आर प्रीवियसली। Now the sum of the endangered species it is very wide list. The animal of Asiatic lion, Bengal tiger, snow leopard, black buck, red panda. These are rhinos, the Nilgiri, Kashmiri red stag, lion-tailed macaw, Indian bison roar. These animals are endangered species in India. And many such species are there. You can search that Red Data Book, download and you can read. Also, this link are available. When you click on the link, you will go to the this endangered list of the endangered animals. Similarly, the in the bird section also, the great Indian bustard, this type of bird, red-headed vulture, they are nothing but giz, forest owlet, spoon-billed sandpiper, Jaden courser. These are the names of the birds. They are now in danger in the Indian region. Also, some of the plant they are also in danger due to this human activity or the over exploitation. That is the Malabar mahogany. Mahogany is the type of wood. Actinodon, Lawsony, Musil, ebony, red sandalwood. Redwood is using for the construction of ilex, Cassania, and Assam Cathiliu. All is the name of the species and their scientific name. They are endangered in this the India. So this is the endangered species, or you can overcome or conserve them by this uh, two method. There are two approaches for conservation of the biodiversity. So these two methods are in situ conservation, on-site conservation जिसको बोलते हैं ex situ conservation, off-site conservation होते हैं। तो दो टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन है, इन सिटू और एक्स सिटू। तो अगर हम इन सिटू में देखेंगे तो बायोस्फीयर रिजर्वायर जो है उनको बचाना, जो नेशनल पार्क हैं उनको बचाना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उनको बचाना, और सेक्रेड ग्रूव्स जो है जो कि है माउंटेनियरिंग रीजन में जो ग्रूव्स है जिसमें एनिमल्स रहते हैं उनको बचाना, इट विल कम अंडर द इंस्टीट्यू कंजर्वेशन। So that conservation help us to save our biodiversity uh, or conserve our biodiversity of the land. Second type is the ex situ conservation, off-site conservation. In that ex situ, the botanical gardens they will come under the in situ. Okay, geological parks,
ex situ seeds banks and gene banks. All these things you can protect the or the conserve the biodiversity, and this is called as off-site bio conservation of the biodiversity. So this we can do, and we can conserve the our system. Okay. So in detail, this notes also I will give you. You can uh, read in detail. And sacred groves are nothing but the some sacred groves are found in the Khasi, Ganesia Hills, Meghalaya, Aravalli Hills of Rajasthan, and some of the part of your Maharashtra, Sarguja, Chanda, Master area of the Madhya Pradesh. There are the sacred groves, and then botanical gardens, geological parks also you are seeing there. They are the ex-situ conservation or off-site conservation of your biodiversity can be done by these systems. Seed banks or gene banks can also be helpful. And also various laws for conservation of biodiversity we are doing. So these laws act made by the Indian Forest Act in 1927, the Wildlife Protection Act in 1972, the Forest Conservation Act 1980. So such acts are also prepared and laws are also made to overcome uh, the threat to the biodiversity. Also, the summits are for the awareness of the people. The Earth Summit and the World Summit are held fairs at different regions, and many countries they are joining for the sustainability and to overcome the current rate of biodiversity loss at global level. All these summits are and uh, to know the values or the figures to the people so that they will overcome. So it is the biodiversity adds a flavor in healthy environment and its conservation at the global level, and it is the need of today. So you can uh, aware about this, then you can aware to your people. So you have learned today the threats of biodiversity, hotspots of biodiversity, list of endangered species, and how to conserve the biodiversity of the hotspots or the region they are endangered species, how we will conserve it. So this is the overall about our this lecture. If you have any doubt, you may ask. Or I think so. The time is over already because we started late. That's why I'm continuing. No problem. So we'll stop here. You have another lecture, and then we'll continue the next lecture. Thank you for joining uh, today. Okay?